Hello friends, welcome to my YouTube channel and here in this video today I will tell you about how to draw shear force diagram and bending moment diagram. So let's start. Consider a cantilever structure. मैं numerical लेने जा रहा हूँ. So suppose a cantilever structure, one end fixed and one end free, and carry a 3-point load. This is 0.6 meter, this is 0.6 meter, and this is 0.6 meter, and the total span 1.8 meter. Okay, and this load is 2000 Newton, and this load 1500 Newton, and this load 2500 Newton. Okay, this is point A, point D, sorry, point B, point C, point D. Okay, now start. uh, it is noted that there are no requirement for the calculation the reaction for cantilever beam. Okay, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर के लिए रिएक्शन कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. सो सबसे पहले हम सीधा shear force कैलकुलेट दी shear force. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट डी से. दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ डी एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी. सो shear force shear force shear force just on right hand side of point D is equal to 0. Okay, and shear force just on left hand side of point D. You know, this 2000 Newton load act on the point D, and the left hand side the load is shear force is 2000 Newton. Um, One point is noted that consider right hand side and taking upward forces are negative and downward forces are positive. Okay, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है साइन कन्वर्सेशन के बारे में. सो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं साइन कन्वर्सेशन के बारे में. नाउ shear force just on right hand side of C, right hand side of point C, that is, this is the right side of the point C, that is one load act. Okay, so positive 2000 Newton. Okay, and after that shear force just on left hand side of point C, this is the left hand side of point C. Okay, तो इस पॉइंट पे जो लोड एक्ट कर रहा है, एक 1500 न्यूटन, एक 2000 न्यूटन. ओके, सो दिस इज पॉजिटिव 1500 Newton plus 2000 Newton. Okay, that is equal to 3500 Newton. Okay, so shear force just on the left hand side of C, that is positive 3500 Newton. Okay, after that for point B, shear force on point B, right hand side of B, right hand side of point B, that is one force, this and this force, that is 3500 Newton. Okay, and after that left hand side of B, shear force on left hand side of point B, that is, this is the left hand point of B. There are three force acting: 2000, 1500 and
2500 Newton. Okay, that is 2500 plus 1500 plus 2000. Okay, that is 6000 Newton. Okay, after that, shear force on point A. Shear force on point A, that is 6000 Newton. Okay, clear. This is the shear force for the particular points A, B, C, D, and after that I will tell you about how to draw the shear force diagram for this value. Okay. Okay, so shear force diagram for this structure. Okay, this is the cantilever structure, and our first value, shear force adjustment point D 0, that is 0, and shear force on the left hand side of D is 2000 Newton, that is 2000, that is 2000 Newton. Here one point to be noted, that the positive value of shear force and bending moment are plotted above the baseline and negative value below the baseline. तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो जो भी बेंडिंग मोमेंट और shear force की पॉजिटिव वैल्यू होगी वो बेसलाइन के ऊपर होगी, एंड जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो नीचे होगी. दैट this is the positive value. Okay, so next step, shear force just on the right hand side of C, that is C point, that is C point. Right hand side of C is 2000 Newton. Similarly 2000 Newton. Okay, after that, shear force just on the left hand side of point C, this is the point C and the left hand side of this, that is 3500 Newton. So this is 35 3500 Newton, that is 2000 Newton. Okay, Newton. And shear force just on the right hand side of B, that is B point, that is equal to 3500. Okay, this is 3500 because 3500 Newton. Okay, after that, shear force just on the left hand side of B, that is B point, left hand side of B is 6000. Okay, this is 6000. Okay, and shear force point at point A, this point A is 6000. Okay, this is 6000 and this is also 6000. Okay, और आप इसको मैच कर सकते हैं, and your shear force diagram will be complete. Okay, so hope आपको ये समझ आया होगा. एंड सिमिलरली अब मैं आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना बताऊंगा एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं. Okay, so now calculation for bending moment diagram. Bending moment diagram. First of all, considering the moment due to upward forces as positive and downward forces are negative. Okay, clear? So start bending moment at point D. हम start करेंगे point D से. So bending moment at point D, at point D, that is equal to 0. Okay, बेंडिंग मोमेंट जो फ्री एंड पे हमेशा जीरो होता है, सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज जीरो. एंड आफ्टर दैट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी. अब यहाँ पे एक लोड लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा ही जब लोड लग रहा है. सो बेंडिंग मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो this force is downward in direction, so sign is negative. Okay, minus 2000 into load into perpendicular distance, this distance is 0.6 meter. Clear? That is minus 1200 Newton meter. Okay, and after that bending moment at point at point B,
that is a point B, and there are two force acting. Okay, so first of all, for calculation for this force 2000 न्यूटन. ओके, सो माइनस 2000 न्यूटन. माइनस साइन का आपको पता चल क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स आर नेगेटिव. ओके, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स एंड into perpendicular distance. What will the distance from B to D? This is zero point 0.6 into sorry plus zero point 0.6, that is 1.2. 1.2. Okay, minus this force 1500 into what will the distance, 0.6 meter, that is equal to minus 3300 Newton meter. Okay, clear. And after that, bending moment at point A. Okay, this is point A, and what will the bending moment at point A? Okay, so there are three load acting, and सबसे पहले हम 2000 न्यूटन के लिए करेंगे माइनस 2000 इंटू टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, दैट इज 1.8 मीटर. ओके, माइनस 1500 इंटू व्हाट विल द डिस्टेंस 1.2 मीटर माइनस 2500 इंटू 0.6. ओके, मैं आपको अच्छे से फिर से समझा देता हूँ एक बार कि जो बेंडिंग मोमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम बेंडिंग मोमेंट ए पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लोड लग रहा है पॉइंट डी पे. सो फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स ए टू डी. एंड जब हम 1500 न्यूटन के लिए करेंगे तो when 1500 Newton load acting at point C, that perpendicular distance is equal to 1.2 meter, and when पॉइंट बी के लिए करेंगे तो डिस्टेंस ये आएगा. ओके, होप सो क्लियर. दैट इज इक्वल टू minus 6900 Newton meter. Okay, that is the bending moments for these point. And now I will tell you about how to draw a bending moment diagram. Okay, so this is a cantilever structure, and first of all, point A, point D, point B, point C. Okay, point B, point C. ठीक है. So bending moment at point D is equal to 0. Okay, 0, that is 0. And bending moment at point C, that is minus 1200 न्यूटन. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो बिलो द बेस लाइन, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड shear force that is plotted in above the baseline. That means minus 1200. minus 1200 इधर आएगा, minus 1200 न्यूटन. ओके, पॉइंट बी पे, एंड पॉइंट बी पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो है minus 33, दैट इज 33, इससे नीचे ही होगा 33. एंड पॉइंट ए पे 6900, that is this point. Okay, so join these points. Okay, so this is your bending moment diagram. Okay, so very simple, do not confuse. And this is your bending moment diagram. Okay, this is 33, this is, I hope you have cleared this topic. And if you like this video, so please share and subscribe. Thank you.